In this particular video, we are going to learn about the rotor earth fault protection. See, the rotor circuit of the alternator is not earthed and a DC voltage is imposed in it, on it, and hence single ground fault in rotor does not cause circulating current to flow through the rotor circuit. Fine. Hence, single ground fault in rotor does not cause any damage to it. But a single ground fault causes an increase in the stress to ground at another point in the field winding and when voltage are induced in the rotor due to transient. Thus, the probability of the second ground fault increases. So, if the second ground fault occurs, then part of the rotor winding is bypassed and the currents in the remaining portion increases abruptly. Okay, fine. Let us understand this particular concept. I'll tell you that if I consider, let's say this is the field winding that I have taken here and this is the exciter. Okay, ये exciter की मदद से हम ये field winding को energize करते हैं. तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस ये DC excitation होगा. So obviously ये DC excitation system है तो it is not grounded. Fine, ये ground नहीं होगा. So ये प्लस और माइनस यहाँ पे और ये field winding यहाँ पे आपकी connected है. So let's say कि मान लीजिए कि ये कोई जीरो वैल्यू और ये मान लीजिए कि ये कोई 400 वोल्ट नहीं, यानी कि ये जो अपनी फील्ड वाइंडिंग है ये 0 से लेके 400 वोल्ट तक ये अभी एज्यूम किया है मैंने कि ये 0 से लेके 400 वोल्ट वैल्यू तक ये वेरी हो सकता है. सो अगर यहाँ पे कोई इंसुलेशन फेल हुआ कोई भी स्ट्रेस की वजह से, ओवर करंट की वजह से, इफ इंसुलेशन फेलियर और स्ट्रेसेस इन द वाइंडिंग ड्यू टू दैट द ग्राउंड फॉल्ट अकर्स. मान लीजिए कि इस पॉइंट पे इंसुलेशन आपका फेल हो चुका है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसका इंसुलेशन फेल हो चुका है और कोर के साथ ये टच हो रहा है. तो मान लीजिए कि ये जो है कोई ग्राउंड फॉल्ट यहाँ पे अकर हुआ. ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट यहाँ पे हुआ. सो ग्राउंड फॉल्ट हैज हैपेंड हियर and some part of the winding is connected to the core of your rotor. So whenever this happen, no return path for this. देखिए यहाँ पे कोई रिटर्न पाथ है आपको दिख रहा है? नहीं, कोई भी रिटर्न पाथ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन अर्लियर दैट सिंगल ग्राउंड फॉल्ट दैट कैन नेग्लेक्ट. ओके, ये बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट आपको नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे रिटर्न पाथ हमें प्रोवाइड नहीं हो रहा है और रिटर्न पाथ नहीं मिल रहा है. अगर रिटर्न पाथ मिल रहा होता तो ही ये जो है सर्कुलेटिंग करंट अपना बनता तो ये वाइंडिंग को डैमेज कर सकता था. ठीक है, सो हाँ, ये परसिस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए. अगर ये कंटिन्यू रहा, ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो इसके ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग के अलग अलग ये आपको टर्न्स दिख रहे हैं, वहां पे स्ट्रेस जो है वो काफी बढ़ जाएगा. ठीक है, वो स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ये दूसरा यहाँ पे कोई इंसुलेशन फेल हो सकता है और दूसरा अगर इंसुलेशन यहाँ पे फेल हो चुका तो क्या होगा, ये दोनों जो भी यहाँ से अगर इंसुलेशन फेल हुआ और ये इंसुलेशन, तो दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे. ठीक है, सो रिटर्न पाथ अभी सिंगल ग्राउंड फॉल्ट के लिए नहीं है तो इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा. बट सी, अगर ये मैं कहूं यहाँ पे 400 वोल्ट पॉइंट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड इवन every part of the winding is connected to the core. Fine. So stress between the conductors and that of the core, that means insulation between conductor and core is stressed to 400 volt. Okay, so 400 volt, so it can see it is designed with that can withstand with 400 volt. Okay, but during transient or you can say in the surge time period, okay, so उस टाइम पे क्या होगा, if higher voltage is obtained, so insulation में stressed and one more ground fault is occur. Let's say अगर स्ट्रेसेस की वजह से अगर ये परसिस्ट हुआ और स्ट्रेसेस की वजह से ये दूसरा यहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट हो चुका, सो ये मैं कह सकता हूँ F1, ये F2. तो अगर ये दूसरा ग्राउंड फॉल्ट यहाँ पे हुआ तो क्या हो जाएगा, रिटर्न पाथ यहाँ पे मिल जाएगा. तो इस तरह से ये रिटर्न पाथ मिल जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हैपेंड. सो बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेटिंग current will pass through like this, okay, in the winding. So as a result of this, whatever the flux should be produced, I repeat, whatever the flux should be produced by this winding, that much amount of flux is not produced because of path is bypassed. पाथ जो आपका है वो बाईपास हो चुका है. तो ये फील्ड वाइंडिंग को जो फ्लक्स प्रोड्यूस करना था, ये एक्साइटर की मदद से ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस करा है, लेकिन ये वाइंडिंग को जो जितना फ्लक्स अमाउंट में प्रोड्यूस करना था उतना नहीं कर पाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाथ जो है वो बाईपास हो चुका है क्योंकि ये दूसरा यहाँ पे फॉल्ट यहाँ पे हुआ तो सर्कुलेटिंग करंट इस तरह से फ्लो होगा.
ठीक है, इसके ये पाथ के थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स विल बी देयर। फ्लक्स आपका डिस्ट्रीब्यूट जो है यूनिफॉर्मली नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई रोटर है, देखिए यहाँ पे कोई कंडक्टर है, देख ले, ठीक है, समझने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ये जो सिरा है, ये इतने वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, ये जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो यहाँ पे अच्छा हो रहा है फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे अच्छा हो रहा है, यहाँ पे अच्छा हो रहा है, यहाँ पे अच्छा, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस केस में तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ऑल एंड ऑल क्या होगा, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लक्स का वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, ऑपोजिंग फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय स्टेटर फ्लक्स। बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिंग फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय योर स्टेटर फ्लक्स. So, non-uniform torque exerted on rotor and because of that, stress will be, on the stress जो होगा वो रोटर के ऊपर आपका पूरा का पूरा जो है वो हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो स्ट्रेस हो रहा है वो रोटर पे, वो दूसरा होगा रोटर का वाइब्रेशन। क्या होगा, रोटर का वाइब्रेशन। ओके, so stress happened on the rotor and another one is rotor vibration also. So because of that, obviously EMF induced in the stator conductor that will also not be uniform. ये जो हो रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटर होगा तो ये स्टेटर के अंदर भी जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके कंडक्टर के अंदर वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये पूरे के पूरे ऊपर नॉन यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पे भी स्टेटर के कंडक्टर के अंदर भी क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से हम जो वोल्टेज बाहर ले रहे हैं तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट पास थ्रू योर स्टेटर एंड योर स्टेटर will get overloaded. Fine. So ये जो है, ये जो इफेक्ट है, अगर हम इसको नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे एक्साइटर और ये सेंटर पॉइंट है, कुछ हाई रेजिस्टेंस वाला कुछ ये हमें जो मिल चुका है, ये सेंसिटिव अर्थ वोल्ट रिले। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका मॉडिफाइड वर्जन दिखाऊं तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से, ओके, सो देखिए ये यहाँ पे पूरा डायग्राम जो है वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि इफ द सेकंड ग्राउंड फॉल्ट occurs then the part of the rotor winding is bypassed and the current in the remaining portion increased fastly and this caused the unbalance of rotor circuit and hence the mechanical and thermal stresses on the rotor. So due to this a rotor may get damaged and sometimes damage of bearings and depending on that bending of rotor shaft takes place, fine, due to the vibrations. So hence the rotor must be protected against earth fault protection. Okay, let's say another one is that, see, there are two methods. First one is like this. First one is this method, that in this method high resistance is connected across the rotor circuit. This high resistance is connected across rotor circuit and it is provided with center tape, and the center tape point is connected to the ground through a sensitive earth fault relay. Fine. So except the center point, the earth fault relay detects the earth fault for most of the rotor circuit. Thus the most of the rotor windings part is protected against the earth fault. Now the second method is that, this is the first method. This is okay, this is the commonly used method. Method 2, the modern method of the providing earth fault protection includes DC injection, or you can say AC injection. Okay, as you can see here, a small DC power supply is connected to the field circuit and a fault detecting sensitive relay, and the resistance are also connected in series with the circuit. This high resistance limits the current through the circuit. Okay, let's have some inner look that what happened in this particular circuit. So you can say that these this field winding is here, another one, and this you can say the plus and minus, this is exciter. Okay, the negative terminal is connected through the relay. This is the relay. You can say this negative terminal is connected through this relay coil to a bridge rectifier. This is your bridge rectifier, and this relay will be
This relay will be overcurrent relay, and we can set time setting, plug setting according to our requirement and according based on your faulty condition and loading condition. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर स्मॉल फॉल्ट यहां पे कुछ हुआ है सो इमीडिएटली अल्टरनेटर शुड नॉट बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी कंसर्न. फाइन, क्योंकि इनिशियल टाइम में अगर कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ स्मॉल फॉल्ट हुआ है तो स्मॉल फॉल्ट की वजह से पूरा का पूरा अल्टरनेटर जो है वो इमीडिएटली डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरेटर जो है वो अल्टरनेटर वो काफी बहुत ज्यादा रेटिंग का होता है. अगर बहुत ज्यादा रेटिंग का होता है क्योंकि पूरी पावर सिस्टम के अंदर जो है उसका काफी अच्छा रोल होता है, तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जो है वो वहां पे क्रिएट हो सकती है अगर इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो चुका है तो. ठीक है, स्मॉल फॉल्ट के लिए. तो स्मॉल फॉल्ट के लिए ये अलार्म सर्किट यहां पे मैंने लगाया है, तो ये अलार्म सर्किट जो है वो अलार्म सिग्नल देगी. ठीक है, सो अगर ये फॉल्ट कुछ ज्यादा हुआ, ऑपरेटर को पता चला, ठीक है, तो अलार्म सर्किट जो है वो बच जाएगी वहां पे स्मॉल फॉल्ट के लिए. लेकिन अगर इफ इट इज परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम देन योर सर्किट विल बी डिस्कनेक्टेड. ओके, ये ट्रिप सर्किट आपकी सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगी. ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में सिर्फ अलार्म ही मिलेगा. ठीक है, सो अप टू सर्टन टाइम इफ प्रॉब्लम इज नॉट रिजॉल्व देन इट विल ऑपरेट द रिले. फाइन, सो दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द ब्रिज रेक्टिफायर. So which is connected to the AC, which is connected to the AC. As you can see, this is the isolation transformer and this is auxiliary 50 hertz supply, which is AC. Fine. So in order to pass current through the relay, there should be a closed path, but secondary side of the bridge rectifier, as you can see here, this secondary side of the bridge rectifier is connected to the rotor core. This is connected to the rotor core, not grounded, huh? This is this thing should be kept in mind that this is the rotor core. Okay, this is not grounded. So in order to pass the current through the relay, there should be a closed path, but the secondary side of the bridge rectifier is connected to the rotor core. So as it is connected to the rotor core, let's say let's assume that the one ground fault is occurred here. Let's say the ground fault is occurred here. Fine. So you can see that this rotor core is this rotor core, and this particular fault is grounded, or you can say this is the rotor core portion. Okay, यहाँ पे क्या हुआ है, ये रोटर कोर के अंदर जो है वो फॉल्ट हुआ है, तो इसका पाथ जो होगा किस तरह से होगा, यस लाइक दिस. फाइन, ये देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पाथ आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस केस में. तो इस केस में क्या होगा, नाउ क्लोज्ड पाथ इज ऑब्टेन्ड एंड योर रिले विल ऑपरेट. फाइन, सो this is how the a rotor or fault protection is provided. So a fault at any point on the field circuit will pass a current sufficient magnitude through the relay and that cause its operation, and the DC supply is preferred and simple to use, and it has no problem of leakage current also. So in the case of AC injection, the high resistance is replaced by a capacitor. Okay, you can replace it by capacitor. So the earth fault relays are instantaneous in operation and are connected to an alarm circuit for indication and to take the proper action. This is because a single ground fault does not require an immediate action of isolating the generator or alternator. Fine. So this is all about the rotor earth fault protection. Now moving further with the protection against loss of excitation, we will see that in next lecture. Thank you.